Hi friends, how are you doing today? क्या आपने 7 अगस्त को IELTS एग्जाम दिया था? If yes, please continue to watch this video as it is related to your result which is going to be declared on the 20th of August, if I'm not wrong. Well, as you know that IELTS exam result declare होता है 13th day of the test date. That means अगर आपका 7 को एग्जाम हुआ था then 20th of August को you can expect your result. बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद भी मुझे EOR रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं. गाइस प्लीज़ एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आई ऑलवेज आंसर व्हाट टू डू इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ EOR. वेल द प्राइम मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो इज़ टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि आप सबका डिजायर्ड बैंड स्कोर आए और आप अपना रिजल्ट देखते ही नाचने लगें और मेरे साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन. हिट द कमेंट सेक्शन एज सुन एज यू रिसीव योर रिजल्ट. शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कहाँ पर एग्जाम दिया था एंड हाउ इज़ योर ओवरऑल रिजल्ट अलॉन्ग विद योर स्कोर इन all the different 4 modules of IELTS. I'm pretty sure you all will achieve the desired score, and since everyone is taking IDP exam now, so you can expect it very early in the morning. However, अगर आपने एग्जाम खुद बुक नहीं किया है या आपके credentials के साथ बुक नहीं हुआ है, then you have to wait till the person who has booked the exam for you don't share it with you. Especially इस केस में आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है जब तक इंस्टीट्यूट खुलता है या उनके पास आपको शेयर करने के लिए रिजल्ट होगा. इट मे बी लिटिल लेट, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सेम डे पर रिजल्ट नहीं आता है, तो प्लीज़ डोंट पैनिक. इट मे हैपन टू यू एज वेल बिकॉज समटाइम क्वालिटी चेक की वजह से या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका टाइमली रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाता है. इन दैट केस द ओनली पर्सन और ओनली बॉडी टू गेट इन टच विद इज IDP. Nobody else can help you. Only IDP can inform you that why your result is delayed. Another thing that I would like to tell you that if you fail to score desired band score, don't get worried. There is an option for you to apply for EOR, that is revaluation. आप fill कर सकते हैं, but I personally recommend राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए जाइए. रीडिंग और लिसनिंग में ज़्यादा चांसेस नहीं है. आप फिर भी करना चाहते हैं, चॉइस इज़ योर, बट द चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर वेरी लेस. राइटिंग एंड लिसनिंग में चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टेंटली भर देंगे. आप ये देखिए कि आपका स्कोर क्या वाकई ही आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो है. If you think your attempt was as good as 6.5 but you have received 5 or 5.5, then don't wait for anything, instantly apply for EOR. लेकिन you are dubious, you are not sure whether to apply. In that case, now we are going to start a new service for you. If you wish that we help you in this case, whether to apply for EOR or not, हमने एक नया सर्विस आपके लिए स्टार्ट किया है. But remember, this service is going to be chargeable. You can contact us whether you should be applying for your writing or speaking exam revaluation. We will tell you that how we can help you and how much would be the charge. In that case, you have to produce exactly the same work as you produce in front of the examiner. क्योंकि सिंपली कह देना कि मेरा सर पार्ट 1 बहुत अच्छा हुआ था, मुझे क्या पता आपका बहुत अच्छे का मतलब क्या है. मैंने क्यू कार्ड में सारा बोला, बस एक लाइन नहीं बोली. आपके सारे बोलने से मैं क्या जजमेंट करूं? मैंने क्यू कार्ड में सिर्फ एक आंसर नहीं दिया तो मेरे कितने बैंड आएंगे? ये क्या बात हुई डियर? इससे कभी भी कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. राइटिंग टास्क सर मेरा बहुत अच्छा हुआ था, मैंने बहुत वोकैबुलरी यूज़ की, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था, मेरे इतने बैंड आए. भाई मुझे क्या पता क्या वोकैबुलरी यूज़ की, किस लेवल से यूज़ की, उसका यूज़ अप्रोप्रिएट भी था या नहीं था, जो आपने डेवलप किया, जो प्रेजेंट किया, क्या वो टास्क रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली था या नहीं था. बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. एंड एज सेड द सर्विस वुड बी चार्जेबल एंड फॉर दिस सर्विस द चार्ज वुड बी 1000 रुपीज़, बट इट कैन सेव योर 11,000 रुपीज़. That is usually the cost of revaluation. तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको रिवैल्यूएशन फिल करना है या नहीं करना है. अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, we can help you, but the service is chargeable, and for that you can approach on the flashing WhatsApp number. So all I would like to say is wish you all the very best.
get your dream score, and I wish you get admission in your favorite university college of your country and get the study visa and a chance to study abroad. That's pretty much all from my side in today's video, my dear friends. Take care of yourself.